much, and a good morning to each one of you. आप सभी का धन्यवाद और हर एक को शुभ प्रभात. Good morning, sister. It's good to be back again. और वापस आना बहुत ही अच्छा लग रहा है. We pray that these meetings, these classes on health will be a blessing to all of you. और मैं चाहती हूँ और मेरी इच्छा है ये जो क्लासेस चल रही है हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आपके लिए एक आशीष का कारण हो. Last week we started a topic on communicable diseases. पिछले हफ्ते हमने जो है बात की थी फैलने वाली बीमारियों के बारे में. How are diseases spread? बीमारियां कैसे फैलती हैं? As we looked in our Bible text today, जैसे कि हमने बाइबल के आज टेक्स्ट में पढ़ा, God says, if you follow my words, I will not put on you all the diseases that I put upon the Egyptians. और परमेश्वर ने कहा कि अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो मैं वो बीमारियां नहीं लूंगा जो मैंने इजिप्शियंस पे दी थी. Now, God gave us a lot of counsel about how to be healthy and how to stop the spread of disease. परमेश्वर ने हमने बहुत अद्भुत रीति हमें बताई है और किस तरह से हम बीमारियों को रोक सकते हैं फैलने से, वो भी बताया है. We're going to be looking at some of the basic principles today, how to stop disease spreading. आज हम कुछ देखेंगे कुछ बेसिक सिद्धांतों के बारे में, किस तरह से बीमारियों को हम रोकथाम कर सकते हैं. We were looking at there are some different kinds of organisms that spread disease. आज हम कुछ प्राणियों की बात करेंगे जो बीमारियों को फैलाते हैं. Now, we have different things like viruses. हमारे पास कुछ चीजें जैसे कि वायरस. This is a very small organism or part of a DNA particle that is so small that we cannot see it. और ये जो वायरस होते हैं इतने जो है छोटे होते हैं कि इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ये बीमारियां फैलाते हैं. डीएनए का एक पार्ट होते हैं ये. Bacteria is a small single cell organism. और बैक्टीरिया जो है एक सिंगल कोशिका निर्मित प्राणी है. It is, most bacteria are our friends. और इसके जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया उसके दोस्त होते हैं. These help us to digest our food. और ये जो है मैम पार्डन प्लीज. They help us so that we can digest the food we eat. ओके, बैक्टीरिया ऐसे लाभप्रद प्राणी हैं जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं. We have several kilos of bacteria on our body. हमारे शरीर में बहुत किलो केजी Yes. बहुत सारे किलो बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर में. These are helping us और ये जो है हमारी मदद कर रहे हैं. on our skin, in our mouth, in our intestines. और हमारी त्वचा में, हमारे मुंह में और हमारे जो है आंतों में ये बैक्टीरिया मदद कर रहे हैं. Now, especially the ones in our intestines, they help with the digestion of food. और विशेष तौर पर वो बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में है वो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं. So we don't want to use medicines that kill bacteria. और तो हम उन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो बैक्टीरिया को मार देती हैं. We want to protect from the bad bacteria. हमें जो है बुरे बैक्टीरिया से बचना चाहिए. So we are going to study today about how we can protect from these bad bacteria. और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को बुरे बैक्टीरिया से बचा पाएं. Now today, many people are saying that to protect from
to protect yourself from bacteria and virus, you need to use hand sanitizer. आज बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर हमें बुरे बैक्टीरिया से बचना है तो हमें जो है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा. But hand sanitizer kills all your friendly bacteria also. लेकिन जो हैंड सैनिटाइजर है वो आपके जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको भी वो नाश कर देता है. We will talk about what are some simple ways that we can protect ourselves. और आज हम बात करेंगे कुछ साधारण तरीके जिससे हम अपने आप को बचा पाएं. We looked at the different virus and bacterial diseases last week. और पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में पढ़ा. We're going to look a little bit about some fungus and parasites. और हमने जो है फंगस आज हमने जो है हमने पढ़ा है फंगस और पैरासाइट्स के बारे में. Now we have a fungus that grows between the toes and calls, in English we call it the athlete's foot, a fungus that grows in the toes, between the toes on the feet, in the area that makes it painful and wet. और आज मैं उस फंगस की बात कर रही हूँ मैं जो जिसको एथलीट फुट में बोलते हैं और ये जो है अंगूठे और उंगली के बीच में होता है. On the feet. पैर में. Now this comes through working in mud. और ये फंगस आता है जब हम मड वगैरह गारा वगैरह में काम करते हैं. When we use sandals or socks or shoes of someone who has the disease. और या फिर हम उनके किसी के सैंडल या फिर शूज या फिर सॉक्स इस्तेमाल करते हैं जिसको कोई बीमारी हो. Or if someone keeps their or if someone does not keep their feet dry. और या फिर कोई अपने जो है पैरों को बिल्कुल सूखा ना रखता हो. Just one moment here. Just one moment, I'll be right back. अभी 1 मिनट में वापस आएंगी मैम. सर्दी काफी बढ़ने लगी है और इसलिए हमारे कई लोग बिस्तरों में ही ज्वाइन कर रहे हैं. बिस्तर में एक नुकसान है कि दोबारा नींद आ सकती है और इसलिए मैं बिस्तर से बाहर आ जाता हूँ. सही कह रहे भैया. है ना? बिल्कुल भैया बिल्कुल. पास्टर भवानी देखो बिस्तर से बाहर आ गए. अनीता बिस्तर से बाहर आ गई. यानी क्या पी रही है? चाय पी रही है, गर्म पानी पी रही है, पता नहीं. मेरा कैमरा खराब है तो मैं पानी पी रहा हूँ. यस, बैक सिस्टर सैंड्रा इज बैक. Yes, sorry. Okay, we were looking at fungus. हम जो है फंगस के बारे में पढ़ रहे थे और सुन रहे थे. Another fungus is called ringworm that makes circles on the skin.
दूसरे फंगस के बारे में जो है जिसे रिंग वर्म बोलते हैं, ये इस त्वचा पर गोलाकार एक निशान बनाता है। It can come on the skin, anywhere, especially in covered areas of the body. और ये जो है रिंग वर्म त्वचा पर आता है, खास करके जो हमारे जो ढके हुए अंग हैं उनमें ज्यादा आता है ये। This is because of not cleaning and washing carefully and keeping the body dry. और ये उस तरह से आता है कि अगर हम उसको साफ नहीं करते हैं त्वचा को और उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा रख के उसे सूखा नहीं रखते हैं, तब ये रिंग वर्म आता है। And also by being in contact with someone who has the disease. और या फिर हम दूसरे के संपर्क में जिस व्यक्ति को ये रिंग वर्म होता है। Another disease is yeast infection, which comes in the reproductive organs or in the urinary area. और दूसरा जो है हम यीस्ट संक्रमण की बात करते हैं जो यूरिनरी एरिया के आसपास होता है। And the reproductive organs. और जो प्रजनन अंग है उनके आसपास होता है। This can be a white color, white liquid, white like curd. और ये जो है व्हाइट कलर का होता है जैसे कि दही के रूप में। Or like a white liquid. या फिर एक सफेद द्रव के रूप में। It can also come inside the mouth, especially little babies. और ये जो है मुंह में आ सकता है, खास करके छोटे बच्चों के मुंह में। Now, this is mostly caused because of people using antibiotics. ये इसलिए आते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। Antibiotics kill off your friendly bacteria. और एंटीबायोटिक्स आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया उसको नाश कर देता है। And so then the fungus can grow and spread. और इसकी वजह से फंगस जो है वो बढ़ती है और वो फैल जाती है। Also, if someone is pregnant, this can be a big problem. और कोई अगर गर्भवती है महिला तो उसको एक समस्या बढ़ सकती है। Okay, now we are going to look at different parasites. अब हम देखते हैं अलग-अलग पैरासाइट्स के बारे में। The first one we look at is Amoeba, which is a protozoa. पहला हम जो है अमीबा के बारे में देखेंगे। ऐसा पैरासाइट है जो कि ये प्रोटोजोआ होता है। This one can cause bloody dysentery. और ये जो है खून के दस्त लगा सकता है। This comes from the feces and then through touching or flies or something, then back to the mouth. और ये जो है मल से आता है और जो मल पे जो मक्खियां बैठती है, मक्खियां जो है हमारे मुंह वगैरह पर आकर बैठते हैं, उसकी वजह से ये जो है पैरासाइट आता है। There's also another one called bilharzia, which may have symptoms of blood in the urine. और दूसरा जो है बिहारसिया जो जिसके लक्षण होते हैं कि यूरिन में खून आना। This comes from a very small worm, a flatworm. और ये जो एक छोटे से कीड़े से आता है जिसको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, चपटा कीड़ा।
This comes from where people urinate in water. और यही वहां पर आता है जहाँ पे लोग पेशाब करते हैं पानी के आसपास। Then when they urinate in the water, then the parasites from the urine go inside snails. और ये जो है जब लोग पेशाब करते हैं पानी में और पानी में जब ये बहता है तो वो स्नेल्स के मुंह में चला जाता है। And then they develop and then they come back out into the water, these parasites. और फिर ये जो है विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद ये फिर से पानी में आ जाते हैं। Then someone goes and plays in the water. They look for fish in the water. They use the water in different for different things. और फिर कोई जो है पानी में खेलता है या पानी में जो है नहाता है या कुछ भी अन्य चीज करता है, उसके संपर्क में ये आ जाते हैं। And so through the water, then they can get the bilharzia again. और फिर से पानी के द्वारा जो है ये शरीर में आके बिहारसिया कुछ जो रोग है उसको कर देते हैं। And which causes blood in the urine and can also cause cancer in the large intestines. और जिसकी वजह से जो है पेशाब में खून आना या फिर जो है बड़ी आंत में कैंसर तक भी ये कर सकते हैं। There's also elephantitis, which is caused by a roundworm. और एक और है एलिफेंटाइसिस जो कि एक राउंड एक जो कीड़ा होता है गोलाकार उसमें वो करता है इसको। This one is transferred by mosquito bites. और ये जो है कैसे ट्रांसफर होता है? मच्छर के काटने से। Another one is Giardia, which is a very bad smelling kind of diarrhea. और एक होता है what is the name ma'am? Giardia. जियार्डिया, और ये जो है एक दुर्गंध पैदा करता है। It's a bad smelling diarrhea. और ये जो है जब दस्त होता है तो उसमें बहुत बड़ी दुर्गंध आती है। This one is caused from stool. From the stool, the parasite then gets on the hands or the some way it gets back into the mouth. और ये जो है मल से आता है या फिर मल पे जो है कीटाणु होते हैं, जो भी होता है वो अगर मुंह के द्वारा संपर्क के द्वारा होता है तो उसके थ्रू ये हमारे शरीर में आता है। Another one is hookworm or threadworm. अगला है हमारा या तो हुकवर्म या फिर एक धागे नुमा जो कीड़ा होता है उसको हम कहते हैं। This is where someone uses the toilet on outside on the ground, and then the worms go into the soil. और ये जो है अगर जमीन पर कोई जो है बाथरूम करता है और फिर वो जो वर्म्स निकल के वो मिट्टी में चले जाते हैं। And then the worms come up from the soil into the feet of children or adults who are working in that area. और फिर ये जो वर्म्स जो है बड़े होकर किसी जो कोई बच्चे खेल रहे हैं या फिर जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनमें वो चिपक जाते हैं। So wherever there is dirty soil, it is important to wear sandals or shoes. और कोई भी व्यक्ति अगर कोई मिट्टी वगैरह पे काम करता है तो उसको सैंडल या फिर जूते पहनने चाहिए। If the soil has been contaminated. अगर जो है जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो गई है। Now there's also a worm that can get in the liver. और एक ऐसा वर्म भी है जो यकृत पे काम करता है। This is comes because of not cooking
fish well, और ये आता है अगर हम मछली को अच्छे से नहीं पकाते हैं, उसके द्वारा आता है। or if someone uses plants, the watercress or other plants growing in the water and don't cook it properly. और ये उनके थ्रू भी आता है जो पौधे ऐसे हैं जो पानी में उगते हैं या पानी के आसपास, उनको अच्छी तरह से ना पकाया जाए। Another insect that spreads from one person to another is lice. और जो दूसरा है इंसेक्ट जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, वो है जुएं। It goes through from one person's head to the other, through hair, through clothes, through bus seats, through और ये beds. जो आता है जुएं जो है एक व्यक्ति के दूसरे संपर्क में, जैसे सिर से संपर्क हो जाए या फिर कपड़ों के संपर्क हो जाए या फिर बस सीट, किसी की सीट पे बैठ के जिस व्यक्ति को था, तो उसके द्वारा भी ये जुएं सिर में आ जाती हैं। Malaria is a from a protozoa or a parasite that comes through mosquito bites. मलेरिया जो है प्रोटोजोआ या फिर जो मस्कीटो बाइट के द्वारा आता है। This one from someone who is infected, the mosquito bites them and goes to someone who is not infected. और ये मलेरिया जो है जिस व्यक्ति को अगर मच्छर ने काटा और वही मच्छर किसी और को जो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसको काट ले तो वो संक्रमित हो सकता है। Another problem is roundworms that come in the intestines. दूसरा जो है गोलाकार जो कीड़े होते हैं जो आंत में होते हैं। This one is from improper cleanliness from the stool to the mouth. और ये जो है अगर जो मल और मुंह के संपर्क के द्वारा आते हैं, अगर उनको अच्छी तरह से साफ नहीं है तो। Another one is scabies, which is an little animal that has 8 legs. Very small animal. Scabies. ओके, दूसरा एक और है जो स्केबीज, ये छोटा सा जानवर होता है। It has 8 legs. और जिसकी 8 टांगे होती हैं। This one comes from being near someone who has the scabies, or touching their clothes or their bed or the bus seat. और ये जो है जैसे स्केबीज को किसी ने टच किया है, वो कहीं जैसे बस सीट पे बैठा है या फिर कपड़े या फिर उसके द्वारा कोई और व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, तो ऐसे ये फैलता है। Now there is a very long worm called the tapeworm. और एक और है जो लंबा कीड़ा जिसको हम टेप वॉर्म बोलते हैं। More than 20 feet long. और ये जो 20 मीटर 20 feet. ओके 20 फीट से बड़ा होता है। मैम, इज इट 20 फीट यू सेड? Yes. ओके Okay, this one lives in the intestines. और ये जो टेप वॉर्म है जिसकी लंबाई 20 फीट के करीब है, ये आंतों में होता है। This one is spread through eating meat and especially fish. और ये जो है मीट खाने से, विशेष तौर पर मछली खाने से होता है। Pork or pig meat, fish, and other kinds of meat. और ये जो है विशेष तौर पर फिश या फिर पिग के मीट में या पोर्क में या इसी तरह का कोई मीट खाने से होता है। And also, if the meat is not very well cooked, it can spread.
अगर मीट अच्छी तरह से बिल्कुल बनाया हुआ नहीं है तो ये जो है फैल जाता है and then it can spread even into the brain and cause someone to go crazy or to have seizures. और ये जो हो सकता है जिसकी से व्यक्ति जो है पागल हो जाता है Or they can get seizures. If they get the worms in their brain, then they can get seizures. Sorry, I didn't get it, man. Okay, if they get the tapeworm in their brain, then they can have seizures where they fall on the ground and their eyes go back. ओके अगर ये टेपवर्म जो है दिमाग में आ जाता है तो उनको सीजर्स होता है सीजर्स का मतलब है वो गिर जाते हैं उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ है वो कहाँ नहीं है उनके बेहोशी की हालत में हो जाते हैं And there are many other types of worms that can be spread through meat. और बहुत तरह के ऐसे बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो मीट के द्वारा फैलते हैं And there's so we see here many different kinds of parasites that cause disease. और हमने अभी देखे हैं कि किन किन तरह के ये पैरासाइट्स होते हैं और जो बीमारियों को फैलाते हैं Now, how do we protect ourselves from all of these? अब ये प्रश्न होता है कि किस तरह से हम अपने आप को इन पैरासाइट से बचाएं The first thing we want to look at is we want to take a bath every day if the weather is hot. और हम जो है अगर मौसम गर्म है तो हमें नहाना चाहिए If it is cold, at least 2 or 3 times a week. और ठंड है तो कम से कम 2 या 3 बार हफ्ते में Now this can help. Now when taking a bath, it is important how you bathe. जब हम नहाते हैं तो ये बड़ा मुख्य है कि हम किस तरह से नहाते हैं Now some people just put the soap on the skin and then pour a bucket of water over. और कुछ लोग जो है साबुन उन्होंने लगाई चेहरे पे और फिर जो है पानी उन्होंने सिर पे उड़ेलना शुरू कर दिया But this does not clean the skin well. और इससे जो है त्वचा साफ बिल्कुल नहीं होगी You want to use a cloth and rub the skin nicely, a soft cloth or a little bit soft cloth, and rub the skin well as you are pouring the water. और जब आप पानी को जो है अपने ऊपर उड़ेल लें तो आप एक कपड़ा लें और कपड़े से पूरे शरीर को थोड़ा सा रगड़ें And then after washing off the soap, then you want to use a dry towel that is a little bit rough. और फिर जो है अच्छी तरह से उस साबुन को साफ करके कपड़े से फिर जो है एक ऐसा टॉवल लें जो बिल्कुल जो थोड़ा सा रफ हो खुरदरा And हो dry nicely. और फिर जो है त्वचा को अच्छी तरह से सुखाएं थोड़ा सा रगड़ के सुखाएं Especially between the toes on the feet. और विशेष तौर पे जो पैरों के जो अंगूठे होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है वहां पर And this will help protect you from different fungus on the skin. और ये जो है विभिन्न फंगस से जो त्वचा में होते हैं आपको बचाएगा Anytime you get your feet wet, you want to dry them nicely. और जब आपके जो है पैर जो है गीले हो जाए तो आप उनको अच्छी तरह से सुखाएं Now also you want to wash your hands often. और अक्सर आप अपने पैर भी अपने हाथ भी जो है बार-बार धोते रहें After using the toilet,
before you cook food. Also, wash your hands after touching animals or before eating. और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, और किसी जानवर को टच करने के बाद भी आप अपने हाथों को धोएं। Or if you touch anything that is dirty. और या फिर कोई ऐसी चीज आप छुएं जो बिल्कुल गंदगी है, तो प्लीज उसको हाथों को साफ करें। Especially if you have gone to the market, when you return, you want to wash your hands well with soap. और जब आप बाजार जाएं और बाजार से आकर अपने हाथों को जरूर साफ करें। Also, it's important to clean nicely under the fingernails. और आपके जो उंगलियों के जो नेल्स होते हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ करें आप। Now, animals can carry many diseases. और जानवर बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ में रखते हैं। Don't let the animals, the dogs, the cats, to lick your face or touch your face. और कभी भी बिल्ली या कुत्ते को अपने चेहरे को लिक ना करने दें। The dogs and the cats and the goats, and the chickens, they should not be where you are preparing food. और जब आप खाना बना रहे हो जिस जगह पर ना तो बिल्ली, ना कुत्ता, ना फिर कोई मुर्गा वगैरह आपके पास आने ना दें। They should not be getting on the table, on the stove, licking the plates. और वो कभी भी अपने आसपास जो किसी या तो टेबल वगैरह को या किसी भी चीज को वो जीभ से टच ना करने पाए अपने। The dogs and the cats should have their own dish separate from our dishes. और जो कुत्ते और बिल्लियों के जो बर्तन है वो बिल्कुल अलग होने चाहिए हमारे बर्तनों से, बिल्कुल अलग। Many people let the animals eat from their own plate after they are finished. कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जब वो खाना खा लेते हैं, जो बचा हुआ खाना अपने ही बर्तन से वो खाना डॉग्स वगैरह को खिला देते हैं। But this is a way that you can spread worms and other parasites from the animals to us. और यही वो तरीके हैं जब जो एनिमल्स के द्वारा हम पैरासाइट्स के दूसरी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। It's important that children should not play where the feces of animals are. They should be play in separate place. और जहां पर जानवरों का मल मूत्र हो वहां पर बच्चों को बिल्कुल ना खेलने दें, उनको बिल्कुल अलग रखें। Children can play in this soil, but it should be clean soil. चिल्ड्रन बच्चे मिट्टी में खेल सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी बिल्कुल साफ सुथरी हो। Where animals have put their feces, the urine, that is dirty soil, and children should not play there. और जिस मिट्टी में जानवर ने अपना मल मूत्र त्याग किया हो वहां पर बच्चों को बिल्कुल ना खेलने दें। From young, children need to be taught to use toilets. और जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाओ तो उनको टॉयलेट्स का यूज करने दें। Even if it is a small toilet, but it should be properly disposed of. और ये बेशक से छोटा टॉयलेट हो, लेकिन वो अच्छी तरह से निपटारा उसका हुआ हो। The refuse should be thrown in the toilet and washed down. और जो मल मूत्र है वगैरह उसमें जो भी त्याग किया गया है वो उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा हो वो। Now, flies are a big carrier of disease. Lice हम बीमारियों को बहुत ज्यादा लाती हैं। They sit on dirty things and then they fly over and sit on our food.
और वो जो है गंदगी वाली जगह पर बैठती हैं, फिर वो उड़कर जो है हमारे आसपास में हमारे खाने पर आ जाती हैं। And then there they clean themselves and put all the dirty things on the food. और फिर वो जो है खाने पर अपने आप को वो साफ सुथरा करती हैं, फिर वो सारी चीजें हमारे खाने में आ जाती हैं। Now, also it is important to put our blankets, our bed sheets, and our bedding out in the sunshine. और हमारे जो कपड़े जिनको हम जो है बिछाते हैं या ओढ़ते हैं, कंबल वगैरह, इनको जो है सूरज की धूप जरूर लगवाएं। This can help prevent the different parasites and fungus and from giving us disease. और इससे जो हम अलग-अलग जो है पैरासाइट्स या जो फंगस वगैरह है और जो दूसरी बीमारी जो फैलाते हैं उनसे हम दूर रख सकते हैं। Bed sheets and other things that we can wash, we should wash often. और हमें जो है चादर वगैरह जो है जिसको हम धो सकते हैं, जिन कपड़ों को, उनको हमें बार-बार धोना चाहिए। Also, if food falls on the ground, we want to wash it nicely, and then it can be used for cooking. Otherwise, throw it away. ओके, अगर खाना वगैरह बनाते समय कोई चीज नीचे गिर जाए तो उसको या तो अच्छी तरह से धोए या फिर उसको जो है फेंक ही दें। Now, if we are going to use vegetables from the market that and not cook them, then we need to make sure that we wash them properly. ओके, अगर हम बाजार से सब्जियां खरीद के लाते हैं और वो अच्छी तरह से साफ सुथरी नहीं है तो उन्हें साफ सुथरी जो है करना चाहिए, धोना चाहिए, उसके बाद ही बनाना चाहिए। Now, if we are cooking it, then just simply washing in water is enough. अगर हम उन्हें बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं उनका, तो साधारण पानी में उनको साफ करें। But if you're going to eat it raw, अगर आप उनको कच्ची ही खाना चाहते हैं, then you want to for 1 liter of water, you want to use 5 drops of betadine. ओके, अगर आप जो है उनको धोना चाहते हैं पानी, तो 1 लीटर पानी में 5 बूंदे बेटाडाइन। बेटाडाइन मैम, इज इट बेटाडाइन? ओके, बेटाडाइन की 5 बूंदे उसमें रखें। और 10 drops of bleach. या फिर ब्लीच की 10 बूंदे उसमें डालें पानी में। Whichever one you have, if you have liquid bleach or if you have betadine, you can put either 5 drops of betadine or 10 drops of bleach in the water. आपके पास कोई भी चीज उपलब्ध है, या तो बेटाडाइन की 5 बूंदे या फिर ब्लीच की 10 बूंदे, वो डालें पानी में। And then put the vegetable that you're not going to cook, put it in the water and cover. और जो आप जो है उसको अगर वेजिटेबल सब्जियों को नहीं बनाने जा रहे हैं तो उसको आप पानी में डाल दें उनको और ढक दें। Cover with the water for 20 or 30 minutes. और जो है पानी में ये जो है 20 से 30 मिनट के अंतराल में रहें। This will kill any infectious diseases on the food. और ये जो है जो सब्जियों पर कोई भी संक्रमित जो बीमारी है उसको दूर करेगी। Okay, is my time finished? अभी समय पूरा हो गया मेरा। Or do I have 5 more minutes? Pastor Bरकत will tell you for this. Pastor बरकत, क्या 5 मिनट और हैं हमारे पास? सर वो है नहीं, हाँ ले सकते हैं आप 5 मिनट और प्लीज। Okay. Also,
if you want to eat fish or meat or chicken, you need to make sure you cook it very well. अगर आप मछली चिकन या मीट खाना चाहते हैं तो वो साफ सुथरे हों. You need to cook it for a long time. ओके, आपको उन्हें लंबे समय तक जो है पकाना होगा. It needs to be cooked all the way through for a long time. और ये जो है एक लंबे समय तक जो है पके हुए हों. Because they have many viruses and bacteria and worms in them. क्योंकि उन मीट के अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे जो है बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक होते हैं. And also worms. और इनमें जो है वर्म्स भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं. Now, if you are cooking meat, you need to have a separate place to cut and prepare the meat from your vegetables. अगर आप मीट बना रहे हैं तो वो जगह और जो सब्जियों की जो है जहां आप बनाते हैं वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए. If you cut your meat in one place and then you cut your salad in the same place, then you are spreading all the disease from the meat to the salad. अगर आप सलाद एक जगह बना रहे हैं और मीट एक जगह बना रहे हैं तो आप जो है आमंत्रित कर रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस कैरिंग वाले जो प्राणी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, आप उस सलाद में भी आमंत्रित कर रहे हो उनको. Now, if you have touched meat, you want to wash your hands nicely with soap and water before you touch vegetables. अगर आपने मीट को टच किया है तो आप अपने जो है हाथों को बहुत अच्छी तरह से साफ करें और फिर जो है सब्जियों को हाथ लगाएं. Because the bacteria, the virus in the meat are very small and you cannot see them. क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस है वो इतने ज्यादा महीन होते हैं, छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते. Also, if you have any food that has a bad smell, maybe it was cooked the day before, you do not want to use that. अगर आपके पास खाना है और आपने उसमें जो है दुर्गंध सी आती है और शायद एक दिन पहले पकाया हो तो आप उसे ना खाएं. Now, if someone is sick and they have a communicable disease, it is important that they have their own separate bowl and plate and glass that they do not share with others. अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो उसके जो है खाने के बर्तन बिल्कुल अलग हो. They should not be sharing the glasses and the spoons and plates between the sick and the well people. और उन्हें ना तो कोई चम्मच, ना कोई गिलास, ना कोई प्लेट जो है कोई जो अच्छा व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए. So today we see many different ways that we can protect ourselves from sharing disease. और आज हमने कुछ ऐसे तरीके देखे जिस तरीके से हम अपने आप को किस तरह से बचाएं और उन बीमारियों से जो फैलती हैं. Now, in the Bible, we see God calls those who have these communicable diseases, God calls them unclean. और बाइबल में परमेश्वर ने जिनको कम्युनिकेशन जो फैलने वाली बीमारी थी उनको जो है अशुद्ध कहा गया है. And he says that they are to be separate. और उन्हें कहा गया कि उनको बिल्कुल अलग रहना है. And this way he asks that we be protected. और इस तरीके से वो बताते हैं कि वो इस तरह से बचाए जाएंगे. Now the sad thing today is people put in quarantine the well people, but God says to put the sick people in quarantine. लेकिन एक बड़ी दुखद घटना है कि क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए जो है स्वस्थ व्यक्ति को रखा जाता है, ना कि एक बीमार व्यक्ति को. God says to put the sick people in quarantine. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है
कि जो बीमार व्यक्ति उसको क्वारंटीन में रखें। The well people, they can be free to walk around and to be careful. और जो स्वस्थ लोग हैं वो जो है कहीं भी जा सकते हैं। Well, I hope that what I've shared today is a blessing to someone. और मुझे आशा है कि आज जो मैंने बोला है वो सबके लिए या किसी के लिए आशीष का कारण हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सिस्टर फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन।